चैनल। जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है ब्रायोफाइट्स। ओके, इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो एल्गी है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप की हैं वो भी हमने देख लिए थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी, अलॉन्ग विद देयर इकोनॉमिक importance and their example also. So today the topic which we are going to discuss in our video is the bryophytes, which is the second topic. The first one was your algae and here the second is your bryophytes. So let's study. So the bryophyte. Here the term bryophyte is derived from a Greek word, okay, where the bryo means the moss, while the phytes always refers to the plants. Okay, it derived from a Greek word where the bryo means the moss and the phytes meaning the plant. And what are mosses and what actually the definition of bryophyte we are going to study in couple of minutes. Okay, so let's begin. See, bryophyte are the group of non-vascular. First terminology that came in the definition of bryophytes, it's the non-vascular. What does the term non-vascular here refers to? See, the vascular plant possesses two tissues, complex tissues. These are xylem and the phloem. Here the role of xylem is to transport the water from roots to the entire plant, and the role of phloem is to transport food from the source to sink. Now you'll think, what is the source? Definitely the mesophyll leaves, the mesophyll bearing leaves, okay, where the food is getting formed by the process of photosynthesis to the sink. Any part of the plant where there is need of food for the growth. Okay, so there are two tissues which are xylem, the first, and the second is phloem, which are comprising the vasculature, and the role of xylem is to transport water while the role of phloem is to transport food from the mesophyll leaves to the any part of the plant where there is need. Okay, so the bryophytes are the non-vascular, meaning the xylem and phloem tissues are absent. They do not have any conducting tissue. Okay, first point. Second is they are terrestrial, meaning they are present on land. Often they are referred to as amphibian of the plant kingdom. Point to remember. Okay? The bryophytes are known as the amphibian of plant kingdom. Why? See, as we have studied, they are known as terrestrial plant. Okay, they live on the land. But one fact about them is that they need water for the fertilization. There is need of the water for the fertilization process. Hence they are known as the amphibian of the plant kingdom. Okay, please remember this point. Amphibian of the plant kingdom is known as bryophyte. So this is because although they live on land, okay, we have discussed already, they are terrestrial plant, they are completely dependent on the external film of water, meaning there is a need of external source of water for the movement of their male gametes. Okay, the male gametes which are formed, so there is a movement of the male gamete during the sexual reproduction. For the movement of male gamete there is need of the water. They represent a primitive stage of the land plant. Okay, the bryophytes are known as the
primitive stage of the land plant during evolution because they are lacking vascular tissue, xylem and phloem, which is found in the higher plant. Hence, they are known as the primitive stage of the land plant. Okay. So, this was all about your bryophytes. They are non-vascular, terrestrial, important point, the amphibian of the plant kingdom, and then they are known as the primitive stage of the land plant during the evolution because they lack the vascular tissues. Now we are going to study about the general characteristics of the bryophytes. See, here it is given a habitat. There are two terms to remember. One is habit, another is habitat. Most of the time you get confused between these two terms. Okay, see, what does habit mean? It refers to a something related to the structure of plant like root, shoot, leaves, related to plant body. Okay, habit. What is habit of the plant? What type of root, leaves? है ना, you can indirectly you can say that what root and shoot. It is related to something your root and shoot. But here the term habitat. The habitat refers to the environment in which the particular plant is present. What type of habitat it is preferring. Okay, so it is its habitat. So here we are taking the point habitat, where they found, okay, or where they are present. Okay, you can say that in simple word, where they are found. Basically they thrive in the moist, okay, moist, shaded and humid localities. Okay, where the bryophytes are found, they are found on moist, shaded and humid localities. Apart from that, they are common in hills and play a major role in plant cessation on a bare rock or a soil. Okay, they play a major role, point to remember, in plant cessation. Okay, here what does the plant cessation refers to? See, the cessation is a biological process by which a particular stable community is formed. ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो बेर रॉक. ठीक है, द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज ओवर द बेर रॉक और बेर सॉइल इज द ब्रायोफाइट. ठीक है, सबसे पहले जो वहाँ कॉलोनाइज करते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं. ठीक है, एक बार ब्रायोफाइट्स वहाँ कॉलोनाइज हो जाएं, उसके बाद वो धीरे धीरे टाइम के साथ में और हायर स्पीशीज़ को वहाँ पर कॉलोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है. ठीक, तो ऐसी जगह बेर मतलब बंजर. ठीक है, तो जो ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, एक स्टेबल कम्युनिटी का प्लांट कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है. और जो सबसे पहले जो वहाँ पर कॉलोनाइज करती है उस पर्टिकुलर जगह पर, जो सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं वो होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स. ठीक है, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो सबसे पहले वहाँ पर कॉलोनाइज करते हैं. ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अनदर इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सी, द प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ algae. Okay, the body of the bryophyte is more differentiated than that of your algae. It is thallus like. What does the thallus refers to? Thallus means it does not have true root, leaves, stem,
Okay, the thallus do not possess this part of the plant. Okay, it is somewhat your flattened structure. ठीक है, वो कुछ आपका एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर की तरह होता है. वहाँ पे लीव्स, स्टेम, रूट्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं. And your thallus can be either prostrate or erect. See, there are two terms, prostrate and erect. Erect meaning, see, if suppose this is your surface, ठीक है, ये आपका surface है. जो पर्टिकुलर प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ठीक है, ये है क्या है आपका इरेक्ट, सिंपल, स्ट्रेट. प्रोस्टेट मीनिंग दिस इज अ सरफेस एंड इट इज ग्रोइंग लाइक दिस अलोंग द सरफेस. ठीक है, सरफेस के साथ में, तो ये क्या है, प्रोस्टेट फॉर्म. ठीक है, तो हमने दो फॉर्म देखा, प्रोस्टेट फॉर्म और इरेक्ट फॉर्म. इरेक्ट जो आपका स्ट्रेट है, सरफेस से अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट है. ठीक, while your prostrate is your along the surface. Okay, along the surface जो grow कर रहा है. This lack of true organ. Okay, the bryophytes lacks the true organ, meaning they do not have true roots, stem or leaves. Instead, they possess root-like, leaf-like or stem-like structure. Okay, they are not having true leaves. What the actual leaf is, they do not possess that. Instead, they have leaf-like. Some are the structure which are quite similar to the leaf, but they are not actual leaf or the stem or your root. Okay, तो क्या होते हैं उनकी जगह पर, हम वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर एनकोरेज. What does the term anchorage refers to? It refers to the attachment. ठीक है, attachment to the your substrate, or you can say to the surface. ठीक है, तो anchorage मतलब attachment. See, they are attached to the substratum. ठीक है, substratum कोई भी material, ठीक है, either it is your rock, wood, tree trunk, anything. ठीक है, any substrate. So they are attached to the substratum by the rhizoids. They do not have roots. They lack roots. Instead of roots, they have rhizoids. Okay, what are rhizoids? They are fine thread-like structure which are present on the surface of thallus. And the role of rhizoids is for the attachment of the thallus to the surface. Okay, which can be unicellular, and the rhizoid can be unicellular or it can be multicellular. Point to remember that unicellular rhizoids are found in liverworts, while the multicellular rhizoids are found in mosses. Okay, so this was the general characteristic of the bryophyte. We have studied about its habitat, the body organization, and the another characteristic feature which is the lack of true organ. Then the anchorage, how they are attached to the any kind of the substratum over which they are growing. Okay, any material over which the plant is growing. Okay, now the another point for the discussion related to the bryophytes is the gametophyte. Okay, they are having the stages, among which one of the stages gametophyte. As the name suggests, gameto meaning this stage is going to form gametes. Okay, and this is the dominant phase. Dominant phase refers to the meaning it occur for the longer duration. Okay, and it is the dominant phase. See, here the bryophytes, the main plant body is the gametophytic. Okay, the main plant body of the bryophyte is gametophytic. Okay, remember this point, important. Okay, which is haploid. Okay, gametophytic phase is haploid.
n number, okay, n number of chromosome, half, ठीक है, represented by n haploid. Now some of the point related to the gametophytic phase. It is long lived, as we have discussed earlier, independent, it is not dependent on any other phase, and photosynthetic. The gametophytic phase of the bryophyte is photosynthetic, meaning they are able to photosynthesize, okay, able to prepare their food, not dependent on the external or any other kind of sources. Take phase of the life. It produces multicellular sex organ. The sex organ formed during this stage, okay, are multicellular in nature. Point to be remember. Now, what are these sex organs? Let's study. See, antheridium. Antheridium is your male sex organ, okay, and archegonium is your फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंथीरीडियम रिलेटेड टू, अगर जैसे याद ना हो रहा हो तो एंथीरीडियम, एंथर याद है, एंथर कहाँ होता है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में होता है, और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. तो यहाँ पर भी जो एंथीरीडियम है वो भी मेल है. ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक हो गई ये याद करने की. एंड सेकेंड वन इज योर आर्किगोनियम. ओके, सो एंथीरिडियम, द मेल ऑर्गन which is club shaped. Remember this point, the antheridium is club shaped and it produces biflagellated, meaning two flagella, okay, biflagellated antherozoids. Okay, these antheridium, which is the male sex organ, imagine this is the, but it is club shaped. Okay, I have made it spherical, but it is club shaped. Inside it, biflagellated antherozoids are produced. Okay, next is your archegonium. See, archegonium is your female organ, female sex organ, which is your flask shaped, something like this, and it produces a single egg. Okay, so antheridium and archegonium. Now here I have just represented a diagram for your better understanding. Okay, this is your Marchantia female thallus and your male thallus of liverworts. Okay, any idea which is your male and which is your female? Okay, let's begin. So what is this? It is something looking like a stalk like structure, which is helping in attachment, है ना? So this is your antheridiophore, okay, and our antheridiophore is your antheridium, in which antherozoids are produced. Okay, so if here antheridium is present, then any idea? This thallus is where the female thallus, female thallus or your male thallus. Definitely this is your male thallus. Why? Because it is having antheridium, and antheridium is your male sex organ. Okay, so any idea what does these structure, these green structure are representing? Something looking like cups, cup-like structure. So this is your gamma cup. These are present on the dorsal side. Okay, on the dorsal side, the front side. Okay, dorsal side here refers to a front, upper surface. Okay, so these are structure present on your dorsal side, and the role of your gamma cup is to help in the reproduction of the thallus. Okay, a type of vegetative reproduction. Take. Now what are these? Fine thread-like structure which are present on the ventral, the lower side of the thallus.
Any idea? These are your rhizoids. As we have already discussed earlier, these are rhizoids, fine thread-like structure, or you can say that hair-like structure present on ventral surface of thallus. Okay, and the role of rhizoids, it's for attachment. And another term that we have used for the attachment is anchorage to the substratum. ठीक? So now we are confirmed that this is our male thallus. Okay, now what is this? This is antheridiophore. Please remember this, antheridiophore, important. ठीक है? Now here the stalk like structure, this is representing your archegoniophore. Okay, and this is your archegonium, in which a single egg is formed. Okay, and the stalk by which archegonium is attached to the thallus is archegoniophore. Now what is this? As we have already discussed, these are your gamma cup and these are your rhizoids. So this was all about your female thallus and male thallus of the Marchantia. Okay, remember this example. It is an example of liverworts. Now the question arises, what is gamma cup? I have already discussed this point, but इसको हम थोड़ा examination point of view से अच्छे से समझ लेते हैं. See, gamma cup. The gamma cups are the small. Okay, these are small, green, definitely showing in the diagram, and cup shaped receptacles. Okay, which are located on the dorsal upper surface of the liverwort's thallus. Okay, they are present only in liverworts. This cup-like structure is absent in mosses. Okay, inside this cup, tiny multicellular green birds called gamete. These cup are known as gamma, but inside this cup, it is looking somewhat like this now over the surface. So inside this gamma, there is presence of a tiny multicellular green birds which are known as gamete. Okay, all these all together are known as gamete, and if you are going to understand singular, they are known as gamma. Okay, are produced. And what is the role of these gamete which are present inside your gamma cup? The primary purpose of these cups is the production and protection of gamete. Okay, these cups are indirectly protecting your gamete, okay, which are present inside them. ठीक है, ये gamete की प्रोटेक्शन में रोल करते हैं. ठीक है, और प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन दोनों में इनका काम होता है. ठीक, which act as a clones. ओके, अब क्लोन्स, यहाँ एक नया टर्म आया डिस्कस करने के लिए. क्लोन्स क्या होते हैं? देखो, क्लोन्स जर्नली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं. पहला पॉइंट समझने के लिए. ठीक है, और ये ऐसे ऑफस्प्रिंग कह लो या फिर डॉटर सेल्स विच आर, remember please these two terms, genetically and morphologically. Similar to the parent. ठीक है, जो क्लोन्स होते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं या ऐसे ऑफस्प्रिंग्स या डॉटर सेल्स जो जेनेटिकली एज वेल एज मोर्फोलॉजिकली जो पेरेंट होते हैं उनके सिमिलर होते हैं. सिमिलर की जगह हम एक और अच्छा टर्म यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिकल. दे आर जस्ट कार्बन कॉपी. ठीक है, दे एक्ट एज अ क्लोन्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. ओके, दे हेल्प इन द क्लोनल रिप्रोडक्शन. ईच gamma is haploid
एन मल्टीसेलुलर बॉडी, डेफिनेटली गैमा इज अ मल्टीसेलुलर बॉडी, है ना, ये तो हमने समझ ही लिया. सिंस इट इज़ प्रोड्यूस्ड असेक्सुअली, ओके, हमें पता है जो भी क्लोन्स होते हैं वो असेक्सुअली ही प्रोड्यूस होते हैं. इट इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट गैमेटोफाइट. ठीक है, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. नाउ स्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ. सी गैमी आर यूजुअली लेंस शेप्ड. जो गैमी जो प्रेजेंट होते हैं गैमा कप के अंदर वो कैसे होते हैं, लेंस शेप्ड के होते हैं. और अपार्ट फ्रॉम लेंस शेप दे कैन बी डिस्कॉइड, ओके, एंड हैव two notch on their side, okay, they have two notch on their side. These notches contain meristematic tissue. Now what is the meristematic tissue? एक और बढ़िया सा टर्म आया आपकी नॉलेज में ऐड होने के लिए, meristematic tissue. Okay, these are the tissue which are comprising the cells which are having the ability to divide continuously. Okay, ठीक है, ऐसे सेल्स जिनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड themselves, ठीक है, डिवाइड themselves continuously, these are known as meristematic tissues. ठीक है, growth point. ठीक है, so this was your about gamete and your gamma cup. Now what is the role of rhizoids? See the primary roles are anchorage. जो प्राइमरी और प्रायर मोस्ट रोल जो होता है राइजोइड्स का वो होता है एनकोरेज. ठीक है, होल्डिंग द प्लांट टू द ग्राउंड सिंपली. ठीक है, प्लांट को होल्ड करके रखता है ग्राउंड से अटैच करने में. ठीक है, and second apart from anchorage they are also helping in absorption. what's absorption किसका, वाटर का और मिनरल्स का. ठीक है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स के. so this was all about your gametophytic phase of the bryophyte which is dominant. now we are going to deal with the sporophytic phase which is dependent phase. हमने पढ़ा जो gametophytic phase होती है वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी. ओके, बट जो उसकी सेकेंड फेज होती है स्पोरोफिटिक फेज जो 2n होती है वो क्या होती है, एक डिपेंडेंट फेज है. ठीक है, सी जाइगोट. ओके, जब दो गैमेट्स, ठीक है, फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या फॉर्म होता है, जाइगोट. ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. और जो जाइगोट होता है आपका, सी आपके जो गैमेट्स बने वो n थे. ठीक है, अब जब ये फ्यूज़ होंगे जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट टाइप का कैसा बनेगा, 2n बनेगा. ठीक है, तो जो जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डज नॉट इमीडिएटली अंडरगो मियोसिस. ठीक है, जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद वो क्या करता है, मियोसिस करता है. ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स में जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इट डज नॉट अंडरगो इमीडिएटली फॉर मियोसिस. ओके, इंस्टेड इट ग्रो एज अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस इट ग्रोज इनटू अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट. वो ग्रो करता है और एक मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट फॉर्म कर लेता है. एंड दिस स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग. ओके, इट इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू ग्रो independently. Okay, it is not free living. This is your important point to remember. The sporophytic phase of the bryophyte is not independent. Okay, वो डिपेंड होती है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, the sporophyte is not free living. It remain physically attached to the gametophyte. ठीक है, जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो अटैच रहता है अपने जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है ना, जो गैमेटोफाइट उससे अटैच रहता है. अब ये अटैच क्यों रहता है, ठीक है, टू ड्राइव द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन जो उसे अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए स्पोरोफाइट को, उनको लेने के लिए वो हमेशा गैमेटोफाइट से अटैच रहता है. ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर में देखें
तो जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो डिवाइडेड होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, सपोज करिए आप ऐसे समथिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ये आपके कैप्सूल का फुट है। अगेन द रोल ऑफ द फुट फॉर अटैचमेंट, और ये आपका सीटा है। ठीक है, और ये आपका कैप्सूल है। ठीक है, अब जो ये सीटा है ये क्या कर रहा है, फुट को और कैप्सूल को अटैच करने में हेल्प करवा रहा है, वाइल जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो आपका स्पोरोफाइट है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। दीज आर फुट, सीटा और कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर आपके स्पोर्स का बनते हैं। ठीक है, इनसाइड द कैप्सूल, ठीक है, जो कैप्सूल होता है, सर्टेन सेल्स, अभी कैप्सूल है, इसके अंदर आपके कुछ सेल्स होंगे, तो इसमें से कुछ सेल हैं वो क्या करते हैं, स्पोर मदर सेल बन जाते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल बन जाते हैं और अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, आप याद रखिए आपकी कैप्सूल है, उसके अंदर सेल्स हैं, जिसमें तो जो कुछ सेल्स होते हैं वो स्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं, और जो सेल स्पोर्स मदर सेल बने होते हैं वो फिर क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस करके ये अपने स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, नाउ अब आपकी कैप्सूल जो है उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, नाउ देयर इज नीड फॉर द डिस्पर्सल। ठीक है, जो स्पोर्स बने हैं उन्हें जो कैप्सूल है उससे क्या करना है, बाहर आना है। ठीक है, सो दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड एंड जर्मिनेट। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल थी उसके अंदर से वो बाहर आते हैं स्पोर्स, और इमेजिन दिस इज योर सरफेस, ये सरफेस पे आते हैं और देन जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स एंड जर्मिनेट टू फॉर्म नेक्स्ट गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जो ये स्पोर्स होते हैं जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट फेस। ठीक है, गैमेटोफाइट। फिर जो आपका गैमेटोफाइट है वो क्या बनाएगा, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट कैसे बनेगा, जो गैमेट्स के फ्यूजन से मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और गैमेट फ्यूज़ करेंगे, फिर आपका ज़ाइगोट बन जाएगा। ज़ाइगोट मियोसिस डायरेक्टली अंडरगो नहीं, ये इनहिबिशन का साइन होता है। ठीक है, नहीं जाता है, वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, जो ज़ाइगोट होता है वो एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, अब जैसे ही स्पोरोफाइट बन जाता है ज़ाइगोट से, जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 उसमें डिवाइडेड होता है पार्ट्स में। दीज आर फुट, सीटा, कैप्सूल। अब जो कैप्सूल पार्ट होता है, जो कैप्सूल पार्ट होता है आपका, उसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ सेल जो होते हैं वो स्पोर मदर सेल का काम करने लगते हैं, उनकी तरह फंक्शन करने लगते हैं। अब स्पोर की मदर सेल्स बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, मदर्स क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। स्पोर्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर में होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है, मियोसिस की होती है ये बनाने के लिए। ठीक है, अब आपके स्पोर्स बन जाते हैं। अब जब स्पोर्स बन गए हैं, जो स्पोर्स हैं वो कहाँ हैं, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। कैप्सूल है, उसके अंदर आपके स्पोर्स हैं। ठीक है, अब जब ये स्पोर्स बाहर आते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो ये फॉर्म क्या करते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद ये स्पोरोफाइट फॉर्म नहीं करते हैं। स्पोरोफाइट हमेशा आपका किससे बनता है, 2n जो बनता है वो कैसे बनता है, आपका ज़ाइगोट से, क्योंकि ज़ाइगोट भी तो 2n होती है और स्पोरोफाइट भी आपका 2n होता है। ठीक है, ज़ाइगोट होती है। ठीक है, उसके बाद जो स्पोर्स होते हैं वो आप गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, जो गैमेटोफाइट होगा वो आपके 2 गैमेट बना देगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो दोनों फ्यूज करके फिर से ज़ाइगोट बनाएंगे। ज़ाइगोट फिर से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से फिर से स्पोर बनेंगे, स्पोर फिर से जर्मिनेट करेंगे और फिर से गैमेटोफाइट बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट साइकिल हो गई।
ठीक. So now the another topic for the discussion is the classification of the bryophytes. Before that, we have studied about the sporophyte, which is the dependent phase, along with the gametophyte, which is the dominant phase. Okay, now we are going to understand about the classification of the bryophytes. See, the bryophytes are divided into two: the liverworts, and the second one is your mosses. Okay, so we are starting from the liverworts. They are also known as the Hepaticopsida. This is just for your extra information. Okay, just remember this word, liverworts. Okay, now what is the body form of the liverworts? Okay, what is their body structure? What type of it is? Okay, see, the thallus of the liverworts are usually dorsiventral. What does the term dorsiventral here refers to? Okay, meaning they have dorsal, which is the upper surface, okay, and the ventral surface. Ventral refers to the lower surface. ठीक, तो आपने दो पढ़ा, अपर सरफेस जिसे डॉर्सल कहते हैं और वेंट्रल जो लोअर सरफेस होता है. तो as we have studied, at the lower surface the thallus bear the rhizoids, and the role of rhizoids is for the anchorage along with the absorption of nutrients. Okay, so the thallus is dorsiventral, meaning it have dorsal plus ventral surface, both surfaces. Okay, and closely appressed to the ground. Okay, it is closely appressed to the ground. Example, Marchantia. ठीक है, the example of liverworts is your Marchantia. Now, what is the leafy structure? Okay, see, some have tiny leaf-like appendages in the two rows of the stem-like structure. What is actually it is? They have like this stem-like structure. Okay, then they are having this. ठीक है, this. Okay, the structure is like this. जो उसका थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, बीच में एक मार्जिन होती है, उसके सराउंडिंग में ऐसा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. Asexual reproduction take place by the fragmentation in which the thalli break down and form new thallus. Okay, apart from that the formation of gamete, ठीक है, also take place. What are gamete? These are green multicellular asexual birds. This we have already discussed earlier. Okay, these are green, as we have discussed earlier. They are multicellular and bear the asexual birds that develop in the small containers called gamma cup. Okay, we have studied that this is somewhat like gamma cup, and inside gamma cup the multicellular gamete are found, which help in reproduction, because they help in the asexual mode of reproduction. ठीक है, these are located on the thalli. ठीक है, जो आपका thallus है उसके surface पे देखो. In this figure you are able to find out these are your gamma cup. These are your gamma cup. This bulging like structure, green bulging structure. These all are your gamma cup. Inside gamma cup you are going to find your gamete, which help in the reproduction. Okay, it is a type of asexual reproduction. The gamete detach and germinate into new individual. Okay, the role of gametes to detach and germinate to form the new individual. So here are the two diagram of liverworts. ठीक है, ये देखो, you are going to see this thallus like structure. ठीक है, and it is a quite magnified image. ठीक, ये देखिए thallus like structure आपको दिख रहा है. Okay, और ये सारे gamma cup है आपके. Now the another class is your mosses, also known as Bryopsida. So first we are going to understand about its life cycle stage.
See, the gametophyte of mosses consists two distinct stages. अब देखिए, जो आपका मॉस है, जो आपके मॉसेस हैं, इनका जो ये गैमेटोफाइट है, इसकी ना दो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। जो पहली स्टेज होती है उसको हमने नाम दिया है प्रोटोनीमा स्टेज। क्या नाम दिया है? प्रोटोनीमा स्टेज, द फर्स्ट स्टेज। एंड योर सेकेंड स्टेज इज योर लीफी स्टेज। ठीक, देखिए हमने पढ़ा जो आपके मॉसेस हैं उनको हम ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं। ओके, तो जो मॉसेस में जो गैमेटोफाइट होता है उसकी दो स्टेजेस होती हैं, दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं, मीनिंग दे आर नॉट सिमिलर। ठीक, तो जो पहली स्टेज है उसको हम प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, एक दूसरी स्टेज है उसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। तो सो योर प्रोटोनेमा स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। ठीक है, दिस स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। व्हेन स्पोर fall on the surface or the substrate, and when they get nutrient they get germinate. Okay, and when the spores get germinate they form protonema stage. ठीक, and this is your first stage when spore germinate and form protonema stage. And your stage is characterized by the features like creeping, green, branched, and often filamentous stage. Okay, it is creeping, green color, and branch and filamentous stage. Okay, this is the feature of your protonema stage. The second one is your leafy stage. So this develops from the secondary protonema. Now what is your secondary protonema? Secondary protonema develop from any part of the mosses apart from the spore. देखो, जो आपको प्रोटोनेमा स्टेज थी वो डायरेक्टली कहाँ से डेवलप हो रही थी? स्पोर से। ओके, जब स्पोर्स आकर जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेज फॉर्म होती है वो होती है प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक, अब यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैसे हमारा फॉर्म होता है? योर सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैसे डेवलप होता है? फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द apart from the spore. Okay, your secondary protonema develop from any part of the mosses apart from the spore. Okay, as the lateral bud. Okay, it can develop from any part. ठीक, just imagine the moss get some injury and the part of it get detached, it later develop into the सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है, तो आपका जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है वो डेवलप होता है किसी भी पार्ट से मॉसेस के, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर स्पोर्स के अलावा। अगर वो स्पोर्स से डेवलप हो रहा है तो इट वुड बी योर प्रोटोनेमा स्टेज। एंड लीफी स्टेज व्हेन इट इज डेवलपिंग अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्स। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस एंड स्पाइरली अरेंज लीव्स। ठीक है, जो लीव्स होती हैं वो आपकी जैसे अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें ऐसे स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होती है। ठीक है, यहाँ जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल होता है। नाउ हाउ द रिप्रोडक्शन टेक प्लेसेस इन मॉसेस? सी, दे हैव एन elaborate mechanism for the spore dispersal than liverworts. Okay, the mechanism of the spore dispersal in them is elaborate as compared to the mosses. Okay, and here are some examples like Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Remember these. Okay, the example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum, and Marchantia. The diagram we have discussed is of Marchantia liverworts. Okay, is the diagram of moss, how mosses look like.
देखो जैसे हमने देखा जो हमारे लिवरवर्ट्स हैं उसमें आपने बहुत ही अच्छा थैलस स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक. बट इन मॉसेस they do not have this thallus like structure. Okay, now we are going to understand about economic and ecological importance of your bryophytes. ठीक. So peat production, the one of the most important use is for the peat production. The species of bryophyte which is known as sphagnum. Sphagnum is a moss. Okay, it provides peat. And what is the role of peat? It help in holding the water. ठीक है, वाटर को होल्ड रखने की एबिलिटी होती है पीट के पास. ओके, apart from that it also have the ability to use as a fuel and as a packaging material for transshipment of living material due to its water holding capacity that we have discussed now. Okay, the role of sphagnum, which is a moss, is to provide peat. And what is the role of peat? That has been used as a fuel, first point, and as the packaging material, second. फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, जब भी आपको ट्रांसशिपमेंट करना होता है किसी भी लिविंग मटेरियल का, ड्यू टू इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अनदर इज योर सॉइल फॉर्मेशन. मॉसेस, व्हाट आर योर मॉसेस? एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस: फ्यूनेरिया, polytrichum. Okay, these are your mosses. Sphagnum. ठीक. So are the first to colonize on bare rock. ये हमने अभी ब्रायोफाइट की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है. सो अमोंग ब्रायोफाइट मॉसेस आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज, ठीक है, ऑन द बेयर रॉक. दे decomposes rock, okay, making the substrate suitable for the higher plant. So what is the role of mosses in soil formation? ये करते हैं, जो rock होता है उसको decompose करते हैं slowly so that the substrate gets suitable for the growth of higher plant. Okay. Another point is the erosion control. Since they form dense mat, okay, on the soil, they are responsible for forming the dense mat on the soil. They reduce the impact of falling rain. Okay, suppose this is a surface and over the surface the mosses have been grown. The mat, they form the mat-like structure. Okay, mosses form mat-like structure. So the impact of the rain here reduces. Okay, directly, as they are not directly falling over the surface of soil. So since they form the dense mat on the soil, okay, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Okay, they reduces the impact of falling rain and prevent the soil erosion. So this was all about your bryophytes. In further videos we are going to discuss about pteridophytes and your gymno and angiosperm. Okay, and thank you for watching, and if you like the videos please subscribe the channel.